My screen is visible to everybody. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So yesterday we did second order partial derivative. Now coming to homogeneous functions. Now what is a homogeneous function? We all know that a homogeneous function is when in each term the sum of the power of x and y are equal. ठीक? So write the definition. A function fxy is said to be homogeneous of degree n in x and y if it can be written in the following forms. Now what are the forms? F of lambda x, lambda y, this is lambda to the power of n, f of xy, if you can write it in this form, or f of xy is equal to x to the power of n into g of y by x. Third is f of xy is equal to y to the power of n into g of x by y. Now similarly, if it is a function of three variables, then fxyz is homogeneous if f of lambda x, lambda y and lambda z, this is lambda to the power of n, f xyz, और दूसरा क्या होगा f of xyz, this is x to the power of n, g of y by x, z by x. और इसी तरह और भी फॉर्म्स लिख सकते हो. जब y to the power of n बाहर आएगा तो x by y and z by y आएगा, and similarly the third one you can write it. Now like example, what are homogeneous functions? Now suppose this is a function fxy is x square plus xy. Now this is a homogeneous function. Here the degree is 2, first term is 2, and here also the degree of the second term is also 2. Okay? So this is of degree 2. And suppose this is the function tan inverse y by x. ये homogeneous है? Yes, ma'am. Yes, डिग्री ma'am. क्या है? Yes, ma'am. डिग्री 0. 2. 0. 0. 0. 0. 1.
ऊपर से देख लो, डिग्री n होने के लिए क्या होना होता है? The function should be written as, now this is y by x, ये वाला देखो तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी कि ये फंक्शन आएगा? 0 0 0 0 0 now ये वाला फंक्शन बताओ, x y z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4, -1. डिग्री -1. यस Yes, ma'am. -1. now is tell about this function. ये हो जाता तो इसकी डिग्री क्या आएगी? -1/2. -half -1/2 ठीक, कैसे निकल रही है समझ में आ रहा है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देख के और माइनस करे दे रहे हैं yes ma'am टोटल पावर को. So this is just the illustration how you find the degree. डिग्री निकालने के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे. Now coming to Euler's theorem. This is if fxy is a homogeneous function of degree n in x and y and has continuous first and second order partial derivatives then first is x del f by del x plus y del f by del y, this is equal to n into f, and second is x square del 2f upon del x square plus 2xy del 2f upon del x del y plus y square del 2f upon del y square, this is equal to n into n minus 1 into f. So we have to prove this theorem. Now since fxy is a homogeneous function of degree n in x and y, therefore we can write fxy is x to the power of n into g of y by x. Now differentiate partially with respect to x and y, we get what you get, del f by del x is equal to n x to the power of n minus 1 into g of
y by x plus x to the power of n into g dash of y by x, and then y by x का डिफरेंशियल माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. क्लियर है सबको? हाँ, चेन रूल लगाया है. ठीक. Okay, ma'am. Yes, Now ma'am. this is n x to the power of n minus 1 g of y by x minus y x to the power of n minus 2 g dash of y by x. Now similarly del f by del y निकालो. Del f by del y, this will be x to the power of n into g dash of y by x into 1 by x. This is x to the power of n minus 1 g dash of y by x. ठीक. Now calculate the value of x del f by del y, x del f by del x. ये था ना क्वेश्चन. x del f by del x plus y del f by del y. ये निकालो. So this will be n x to the power of n g y by x minus y x to the power of n minus 1 into g dash of y by x plus y x to the power of n minus 1 g dash of y by x. ठीक. तो सेकेंड और थर्ड वाले टर्म ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें बचा क्या? हमें बचा n x to the power of n into g of y by x. Now what is this value? This is the value of f. So this is n into f. Suppose this is equation number 1 and the part 1 is proved. Now for the second part we have to calculate the second differential. So again we will differentiate it partially with respect to x and y. So again differentiate one partially with respect to x and y respectively. We get क्या मिला हमें? पहला जब x के रिस्पेक्ट में किया तो x del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस, अब इसको करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? फर्स्ट अभी तो यही वाला बचा है. पहले x को रखा रहने दिया, इसको किया, इसको रखा रहने दिया, x को करें. तो दिस इज del f by del x plus y del 2f upon del x del y. This is n del f by del x. Question number 2. And with respect to y करोगे तो x del 2f upon del y del x plus del f by del y plus y del 2f upon del y square. This is n del f by del y. Question number 3. Now you have to get x square del 2f upon del x square, जो हमें proof करना है. And we have x, so we multiply this equation by x and this equation by y. So we get the terms x square del 2f upon del x square plus y square del 2f upon del y square. To multiply equation number 2 by x and equation number 3 by y and adding the two equations. So equation number 2 को x से multiply किया and equation number 3 को y से multiply किया and add किया. And this gives x square del 2f upon del x square plus x del f by del x plus y del f by del y plus xy del 2f upon
del x del y plus del 2f upon del y del x. नाउ ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बराबर होते हैं, दोनों बराबर होंगे। कल हम लोग ने देखा था del 2f upon del y square, this is equal to n x del f by del x plus y del f by del y। ठीक, नाउ फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज n इंटू f, और सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, n इंटू f। तो अब इसको देखो, अरेंज करो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर del 2f upon del x square plus 2xy, because these two fxy and fyx are equal, because these are first and second order are continuous, which is given in the theorem. So del 2f upon del x del y plus y square del 2f upon del y square, this is equal to, अब n को इस वाले टर्म को उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, n into n minus 1 f, hence 2। क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming to the question on this, if uxy is equal to x square tan inverse y by x minus y square tan inverse x by y, now this is a continuous function. By that this is a homogeneous function. By the definition we can see this. Now Euler's theorem can be applied only for homogeneous function. So first of all check whether it is a homogeneous function or not. Then evaluate the value of x square del 2y upon del x square plus 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y square. Now 2f. Here we have to first prove that it is homogeneous, then we have to prove that its higher order partial derivatives are continuous, fxy equal to fyx. So नहीं, ये तो आपको देखने से ही लग रहा है ना, ये दोनों पॉजिटिव है, ये कंटिन्यूअस होमोजीनियस है, ये दिख रहा है। This is x to the power of n into a function of y by x, and this is y to the power of n into a function of x by y. So this is a homogeneous function. So you don't have to prove it. And when you calculate the partial order derivatives, of course you can find out the partial order derivatives because their denominators are not zero. It is all, they are always positive. Okay. So this will exist, and this is a continuous function. Tan inverse is a continuous function, so its derivative will also be a continuous function. Then you can do it. okay, ma'am. So you have u of lambda x lambda y, this is lambda square of uxy. So this is a homogeneous function of degree 2. Here it is very clear. So therefore uxy is a homogeneous function of degree 2. You have to find out the degree because it is in the
formula n. So now by Euler's theorem, we directly apply x square del 2u upon del x square plus 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y square. This is equal to क्या होता है n into n minus 1 into u. f होता है यहाँ पे हमारा u है Yes, into ma'am. u. So this is 2 into 2 minus 1 into u. So this is 2 into u xy. This is the answer. Ma'am, we have to write value of u. रख दो नेक्स्ट टर्न पे, वो कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं. मैम इसको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा या फिर मैम मैसेज दे सकते हैं आंसर डायरेक्ट? इवैल्यूएट क्यों करना, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना आइलर्स थ्योरम को. प्रूफ Yes, ma'am. करने को थोड़ी बोला गया है, यूज तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना. बस डिग्री निकालो और रख के और वैल्यू निकालो. बस ये चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन होमोजीनियस है, उसकी डिग्री क्या है, डिग्री सही से निकालो. और उसका अगर दिख रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि वो उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस होंगे, सो यू कैन प्रोसीड. पर ये इतना आसान सा खाली 2 लाइन का क्वेश्चन अकेले तो आएगा नहीं, तो साथ में कुछ और भी लगा रहेगा. फिर हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कुछ इस तरह से हो सकता है. Ma'am, नाउ नेक्स्ट इज in the exam, do we have to write the proofs of theorems also? Those questions also come. बेटा अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं तो ऑफ कोर्स थ्योरम्स एंड के प्रूफ पूछे जाते हैं. अब जैसे पिछले साल से हुआ था कि ऑनलाइन ही तुम लोग का एग्जाम हो गया, वाइवा ही हो गया. तो वाइवा में वो डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर, जो भी एग्जामिनर आपका एग्जाम ले रहा है, अगर वो प्रूफ पूछ रहा है तो आपको लिख के दिखाना है. अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो क्वेश्चंस करके दिखाने हैं ऑनलाइन. उस So समय in पे Viva, आपका we will वीडियो, write the answer and show it to the examiner. अगर वाइवा होता है तो फिर आपको वीडियो ऑन उस समय रखा जाता है और सामने बैठ के सॉल्व करना होता है. Okay, ma'am. और अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं जो कि तुम लोगों के कब होने, शायद अप्रैल मई में होने, एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब होने हैं, अप्रैल में होने. तो अप्रैल तक तो हो सकता है कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए तो ऑफलाइन एग्जाम ही हो जाए. मिड सेमेस्टर हो सकता है ना हो, तो मिड सेमेस्टर के लिए हम लोग क्विज इसीलिए ले रहे हैं. तो पहला क्विज तुम लोगों का संडे को है. टाइमिंग जब होगी तो उसे कम्युनिकेट कर देंगे. हमने मैसेज डाल दिया था व्हाट्सएप पे, सबको मिल गया होगा. मैम आपने ग्रुप में मैसेज जो डाला है मैथमेटिक्स क्विज के बारे में, तो उसमें 5 क्विजेज हैं जो मार्च अप्रैल तक जाएंगे. तो फिर वो सारे सिर्फ मिड सेम के ही हैं या फिर उससे एंड सेम का भी इवैल्यूएशन हो जाएगा? नहीं, वो सिर्फ मिड सेम के ही हैं. हर यूनिट की कंप्लीशन के बाद ओके मैम. एक क्विज मैम होगा. मिड सेम में या तो 5 यूनिट्स पढ़ने हैं और उसके बाद में एंड सेम के लिए और भी पढ़ने होंगे? नहीं, वो टोटल कोर्स है तुम्हारा, वो टोटल कोर्स है. उतना ही मिड सेम का भी है और उतना ही एंड सेम का भी है. अब क्योंकि अगर ऑफलाइन हो रहा होता तो आपका मिड सेम का कोर्स डिसाइड होता है कि 3, क्योंकि 6 यूनिट है तो 3 यूनिट आएंगी, 3 यूनिट उसमें आएंगी. पर वो कोई तो वो तो दे नहीं रहा हो, तो क्विज लेना है तो क्विज अपना जब जब एक एक यूनिट कंप्लीट होती जा रही है तब तक एक एक क्विज होता जा रहा है. मतलब आपको
टाइम भी तो मिल रहा तो है मैम कि मिड एक सेम क्विज में आपको जैसे एक ही यूनिट पढ़नी है। मतलब 3 ही चैप्टर लास्ट तो में मैम 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं मतलब इन सेम के लिए कि पूरा पूरा पढ़ना है बेटा, पूरा एंड सेमेस्टर में पूरा पढ़ना है। और मैम क्विज में जब आपका एक एक यूनिट का होगा जो भी उसमें मैम लिखा हुआ है। मैम मिड सेम के लिए मैम फिर 3 ही चैप्टर मतलब वो 3 ही चैप्टर के मार्क्स जाएंगे या मैम सबके जाएंगे? सबके जाएंगे, बोला ना। क्विज अगर ऑफलाइन होता तो ऐसा होता, पर आपका ऑफलाइन नहीं हो रहा है ना, ऑनलाइन हो रहा है। मिड सेमेस्टर नहीं हो रहा है अभी की सिचुएशन के हिसाब से, तो लग ही रहा है कि मिड सेमेस्टर नहीं होगा। अगर मिड सेमेस्टर नहीं होगा तो आपका जो क्विज होगा वो ही कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल 5 क्विज होंगे 20-20 मार्क्स के, और सबका एवरेज निकाल के फाइनल 20 मार्क्स का आपका मिड सेमेस्टर उससे कैलकुलेट कर दिया जाएगा। अब क्लियर है? और जब यहाँ एग्जाम देने यस आओगे तो वो 60 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम, एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। और 20 मार्क्स का टीचर्स असेसमेंट होता है, जिसमें कि 15 मार्क्स हमने आपको असाइनमेंट में दे दिया है और 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होंगे। मैम मैथ्स में भी वाइवा होता है? नहीं, वाइवा अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो वाइवा नहीं होगा, अगर ऑनलाइन होगा तब होगा। वाइवा एंड सेमेस्टर की जगह पे होगा ना, अगर होगा तो रहेगा तो उससे हाँ हाँ मैम जो आपने असाइनमेंट दिया वो सबमिट तो टाइम पे कर दिया, बट अगर उसके बाद वो क्वेश्चन गलत बना रहेगा तो उसका मार्क्स नहीं काटता है। क्वेश्चन गलत होगा तो नंबर तो कटेंगे है ही मैम। तो ये तो प्रैक्टिस टाइप नहीं, तो अब वो तो एग्जाम हो रहा है, तुमको दे दिया गया है कि तुम अपने आप से किताब खोल के करो, उसके बाद भी अगर गलत कर रहे हो तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। ये थोड़ी कि सबमिट विद इन टाइम कर दिया, भले 2 ही क्वेश्चन करके दे दिए तो हमें भी उतने ही नंबर मिल रहे हैं, और किसी ने पूरे 30 जितने 35 क्वेश्चन दिए वो सब किए उसको भी उतने ही नंबर मिल रहे हैं, तो फिर वो जबरदस्ती बच्चा मेहनत कर रहा है इतने क्वेश्चन करने में। चलो, लेट अ फंक्शन fxy be defined in some domain D in R square. Now टेलर्स सीरीज तुम लोग ने सिंगल वेरिएबल की पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी है ना। अब हम लोग यहाँ पे टेलर सीरीज देखेंगे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल की हम लोग जानते हैं। So this in R square have continuous partial derivatives। अब ये जितने भी थ्योरम्स तुमको पढ़ाए जा रहे हैं जिनके नाम है, जैसे टेलर्स थ्योरम है, आइलर्स थ्योरम है, तो इनके प्रूफ के साथ स्टेटमेंट भी याद करना, ठीक? क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ, तो स्टेटमेंट के एक, अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तुम्हारा स्टेटमेंट का है और 3 नंबर तुम्हारा प्रूफ का है, इस तरह से होता है। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट गलत लिख दिया तो 1 नंबर चला गया, भले तुमने प्रूफ पूरा सही लिखा हो, ठीक है? तो स्टेटमेंट भी याद करना सबके। have continuous partial derivatives up to n plus 1th order in some neighborhood of a point P x0 y0 in D. Then for some point x0 plus h, y0 plus k in this neighborhood,
we have f of x0 plus h y0 plus k is equal to f of x0 y0 plus h del by del x plus k del by del y of f at x0 y0 plus 1/2 फैक्टोरियल वहां पे क्या होता था del 2f अपॉन del x स्क्वायर ऑफ f of x0 y0। अब यहाँ वहां पे खाली एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो हम h del x by del x plus k del by del y whole square x0 y0 plus so on plus 1 upon n factorial h del by del x plus k del by del y whole square whole की पावर n f x0 y0 plus rn। यहाँ rn क्या है, रिमाइंडर टर्म, where rn is the remainder term given by rn is 1 upon n plus 1 factorial h del by del x plus k del by del y power n plus 1 f x0 plus theta h y0 plus theta k, where theta lies between 0 and 1। ठीक, तो दिस इज टेलर्स थ्योरम। आप लोग ने सिंगल वेरिएबल में भी टेलर्स थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें रिमाइंडर टर्म मिलता है, एंड व्हेन दिस रिमाइंडर टर्म इज that is when this we take as n tends to infinity, at the as n tends to infinity this remainder terms tends to 0, and we have the infinite series which we called the Taylor series. Taylor series expansion of a function is an infinite series, we all know. So write the remark, and similarly if we expand the series about 0, then we get the Maclaurin series. Same here also, if you expand it around the origin 0 0, then you get the Maclaurin series. So if x0 y0 this is equal to 0 0, then we get Maclaurin theorem. Maclaurin's theorem. And second is, if limit n tends to infinity Rn is 0, we obtain Taylor series expansion जो कि पूछा जाता है of f(x,y) about x0 y0। Here n is the degree of f of x and y. n कहाँ है, यहाँ पे h है, x0 plus h, x0 के नेबरहुड में एक्सपैंड करोगे ना, x0 plus h is this about which point you are expanding. Yes, ma'am. I was talking about the n plus 1th order. There n refers to its degree. डिग्री नहीं है, n तो
nth टर्म है, कौन सा टर्म ले रहे हो? nth टर्म के बाद n+1th टर्म आएगा ना, n फैक्टोरियल के बाद Rn आ रहा है, रिमाइंडर टर्म तो n+1th होगा ना. So now proof of Taylor's theorem. So let x is equal to x0 plus h, y is equal to y0 plus k, and let this be th, x0 plus th, and this is x0 plus tk, where t lies between 0 and 1. Okay. Let us include 0 and 1 also. So define phi t is equal to fxy. This is f of x0 plus th and y0 plus tk. Now by chain rule, हो सकता है ना, because x is a function of t, x0 will be given to you and h will be given to you, and similarly y0 is a fixed point and k will be given to you. So here also y is a function of t. So x and y both are functions of t. So we can write fxy as a function of t. So by chain rule of differentiation, phi dash t is equal to del f by del x into dx by dt plus del f by del y into dy by dt. Now put the value of these functions. So this is h del f by del x plus k del f by del y dx by dt की वैल्यू रखी and dy by dt की वैल्यू रखी. So this is h del by del x plus k del by del y of f. We can write it in this form. Now similarly phi dash t निकालो. phi double dash t क्या हो जाएगा? इसी तरह निकालोगे. So I am writing it direct here. Del by del x plus k del by del y whole square f. And similarly phi n plus 1 th derivative of at the point t, this is equal to h del by del x plus k del by del y to power n plus 1 f. Now we have transformed this double variable function into a single variable. Now we will apply Taylor's theorem for single variable. We have already proved Taylor's theorem of single variable, not in my class, but you all know that it has been proved. You all know the proof, so we can use the Taylor's theorem for single variable for the proof of double variable. So using मैम ये थोड़ा ऊपर ये सिर्फ phi dash t के इक्वल ये कैसे आया? यस मैम ये वाला dx by dt की वैल्यू क्या आएगी? h. मैम ये तो पता है, इससे ऊपर वाला ये बाई चेन रूल के बाद phi dash t निकालोगे तो क्या आएगा? phi dash t क्या है? f is a function of x and y. तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो यही तो आएगा ना, del f by del x into dx by dt चेन रूल. ओके मैम, सही है? यस मैम. फिर x का t के रेस्पेक्ट में लिया है. हाँ.
So by Taylor's theorem, for a function of one variable with t is equal to 1 and a is equal to 0, we obtain phi of 1 is equal to, क्या होगा यहाँ पे t plus a होता है ना, phi of t plus a, तो दिस विल बी क्या होगा, a is equal to 0 है, phi of a 0 plus phi dash of 0 plus 1 upon 2 factorial into phi double dash 0 plus so on plus 1 upon n factorial phi n 0 plus, हम नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस 1 upon n plus 1 factorial phi n plus 1 at 0. Now this is equation number 1, where what is phi 0 here? Phi 0 is f of x0 y0. Similarly phi 1 क्या होगा, x0 plus h, phi 0 plus k, t k है ना, put the value of t is equal to 1, ठीक, and phi I ith डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, h del y del x plus k del y del y, हम ऊपर निकाल चुके हैं, की पावर I f at x0 y0, where I varies from 1 to n. And phi plus n, phi n plus 1 at theta, ये क्या हो जाएगा, उसी वैल्यू में फंक्शन जो ऊपर वैल्यू निकाली है उसी में रख दो सब, तो h del y del x plus k del y del y की पावर n plus 1 into f of x0 plus theta h, ठीक, t की जगह थीटा रख दिया, y0 plus थीटा k, और थीटा हमारा 0 से 1 के बीच में. Now put all these values in equation number 1. So putting all these values in equation number 1, we get the Taylor's theorem. ठीक, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं. Now next is error estimate. What is the value of Rn? For n is equal to 1, that is linear approximation,
एरर टर्म, हाँ मैम 5 डबल डैश कैसे आया, एक बार वो समझा दीजिए ना। फाइव डबल डैश कैसे आया? सिमिलरली बेटा अपने आप करो, उसमें जैसे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया है, फाइव डैश का फिर से डिफरेंशिएशन करो, यही आएगा। वो स्टेप हमने स्किप किया है क्योंकि वो सिंपल डिफरेंशिएशन है चेन रूल का, वो आप अपने आप से करो। उसमें 2xy वाला टर्म आएगा तो उसका स्क्वायर बन जाता है। आप देख लो अपने आप से पहले। आज टर्म इज mod of r1 is 1/2 फैक्टोरियल। ये टर्म हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर वैल्यू लिख रहे हैं और इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। ये एरर टर्म ये आता है, ये कैलकुलेट कैसे होगा इसका पूरा प्रूफ है, दैट वी आर स्किपिंग। fxy plus y minus y0 whole square into fyy. Error term is this, and maximum absolute error in linear approximation of fxy about x0 y0 is b by 2 mod of x minus x0 plus mod of y minus y0 whole square, where b is equal to maximum of mod of fxx, mod of fxy, mod of fyy, where xy belongs to real number in the given region, जो भी रीजन दिया होगा उसमें। Similarly, for n is equal to 2, that is quadratic approximation। ये कल पढ़, नेक्स्ट टर्म पे इसको पढ़ लेना, कल तो होगा नहीं क्लास, अब आपका जब भी होगा तो नेक्स्ट टर्म पे इसको एक बार रिवाइज करके आना, जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज होगा। एरर टर्म इज mod of r2 is 1/3 factorial and x minus x0 whole cube fxx plus 3 x minus x0 whole cube y minus y0 fxxy plus 3 x minus x0 y minus y0 whole square fx y plus y minus y0 whole cube fyy। ठीक, सो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा मैम? है x minus x नॉट जीरो तो स्क्वायर होगा सेकंड टर्म। x माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। हाँ, एंड maximum absolute error at x0 y0 is b by 6 mod of x minus x0 plus mod of y minus y0 whole cube, where what is the value of b, where b is equal to maximum of mod of f triple x, mod of double xy, mod of x y y, and mod of
वाई 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 बिल्कुल वही एक्स वाई जेड एक्स वाई ही है एक्स वाई इन आर in the given region. ठीक, ये हम भेज देंगे आपके पास, इसको पढ़ के आना, नेक्स्ट वाले टर्न पे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे हम निकालेंगे और सीरीज और कैसे उसका लीनियर और क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। You can leave now. Thank you, ma'am. Thank you.